वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही खास मेहमान जो कि शदीद ढूंढने के बाद मुझे फाइनली पाकिस्तान में एक ऐसे साहब मिल गए जिनसे मैं ये कॉन्वर्सेशन कर सकता हूँ। बहुत रिसेंटली इनका फंड रेजिंग राउंड अनाउंस हुआ था एंड आई न्यू वन ऑफ द इन्वेस्टर्स देयर, सो आई आस्क्ड हिम टू कनेक्ट मी विद हिम। आई बिलीव यू गाइस आर बेस्ड आउट ऑफ कराची। Our head office is Karachi, but we actually have an office Islamabad में भी और Lahore में भी. And you're visiting Islamabad for a couple of days, I believe. I'm here for a couple of days, लेकिन इंशाल्लाह इस्लामाबाद में regularly चक्कर लगता रहेगा. अच्छा, ज़बरदस्त। मोहम्मद बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। He's the co-founder of Farmdar and the CEO as well. But Correct. ज़बरदस्त। So मोहम्मद, मुझे पहले तो ये बताएं कि how are you? I'm really well, thank you. It's nice to be in Islamabad. मैं actually अभी recently London से move हुआ, मुझे तकरीबन 10 दिन हुए and already I've visited a number of places and I actually have always had a soft spot for Islamabad. Let me put it that way. तो ज़बरदस्त। इस्लामाबाद में वेलकम भी आपका बड़ा अच्छा किया है। I don't know आप लोगों को आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, लेकिन एक तूफान आया हुआ है और हमारी खिड़की के ऊपर जो है ना बारिश की छींटों की आवाज़ें आ रही हैं। I'm going to start the conversation with just trying to understand a bit about your early life and कहाँ पर आप पैदा हुए, कहाँ पे एजुकेशन ली and so on. तो जी मेरी पैदाइश कराची में थी। आई थिंक मैं 4 या 5 साल का था जब मेरे पेरेंट्स लाहौर शिफ्ट हुए एंड फिर मैं एक्चुअली थ्रू माई अर्ली लाइफ लाहौर में ही रहा अंटिल माई ए लेवल्स, हाई स्कूल कह लें उसको आप, और मैं एक ही स्कूल में रहा थ्रू आउट दैट होल। कौन सा स्कूल था? ये बीकन हाउस गार्डन टाउन ब्रांच। वंडरफुल प्लेस, अमेजिंग मेमोरीज ऑफ द स्कूल एंड स्टिल फ्रेंड्स दैट आई हैव दैट I knew from class 2, right, that I'm in touch with. और ये कौन सा year था when you graduated high school? It would have been 1996 or 97, something like that. Right. Ji. And then for your bachelor's? For my bachelor's, I went to Queen Mary, University of London. वहाँ से मैंने economics की डिग्री की. लेकिन actually मैं academically orientated कभी ज़्यादा नहीं था. I used to get distracted with sort of projects and things like that. Right. तो अपने सेकेंड ईयर में मैंने एक स्टार्टअप के साथ काम करना शुरू कर दिया ऑन अ पार्ट टाइम बेसिस टू बिगिन विद, और फिर अपने थर्ड ईयर को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करके फुल टाइम मैंने एक स्टार्टअप के साथ वहाँ पे काम किया। 97? No, sorry, but I with 96, 97 really I met my O levels. Okay. 99 में मैंने अपने A levels complete किए, so I moved just on the turn of the millennium. Okay. And still very early on, like उस टाइम पे तो बंदा कहता है कि यार मैं इकोनॉमिक्स कर रहा हूँ, किसी बैंक में घुसता हूँ। हाँ जी, एक्चुअली मैंने भी उसको कंसिडर किया था और मैंने इनफैक्ट यहाँ पे पाकिस्तान में एक बैंक में इंटर्नशिप की थी। अच्छा। और इट वाज वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग थिंग्स दैट आई एवर डिड एंड लाइक इट रियली पुट मी ऑफ for a very very long time. मेरे से हुआ नहीं हुआ। So I really liked the fact कि जो startup मैंने join किया था वो बहुत early stage company थी. They had a very sort of collegiate and kind of fantastic culture. तो उधर मैं काफ़ी blossom हुआ. Similar to Beacon House, to be honest, like I have a lot of fond memories, a lot of amazing friendships that were created in Beacon House. And what I really particularly जो मुझे उसकी एक बात बहुत पसंद थी, वो एक बहुत ग्राउंडेड सा स्कूल था, राइट। स्टूडेंट्स और हम मेरे जो फ्रेंड्स थे वो हर वॉक्स ऑफ लाइफ से थे। अच्छा। एंड एक बहुत बड़ा स्कूल भी था, हमारी क्लास साइजेस बहुत बड़ी थी एंड थिंग्स, एंड ऑल बॉयज़ भी था, तो एक्चुअली इट वाज अ लॉट ऑफ फन। आई फील ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है बीकन हाउस के बारे में, बिकॉज बीकन हाउस एक्चुअली हैज़ दैट लाइक अगर सोशियो इकोनॉमिक क्लास वाइज देखें ना तो दे हैव अ वेरी गुड वेरिएशन। बिल्कुल। You've got kids who are from very comfortable families and then you have kids जो कि पेरेंट्स ने बड़ी जान मार के पैसा जोड़ के जी मैं बीकन हाउस से भेज रहा हूँ बच्चे को ताकि वो सोशल मोबिलिटी जाए। And when you're in that school, you don't really care or know about the backgrounds. You're just all on the same level. Exactly, ये चीज़ है। And actually what I found was कि there was a level of sort of a desire or hunger in the students. तो मेरे जो batchmates थे, if you look across the world, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बहुत like amazingly successful लोग हैं उस बैच में से, and so I think वो इसी grounding का एक factor था, you saw the hunger and actually like you wanted some of it, and like people were in that environment जहाँ पे they just had that drive and ambition. Growth basically. and healthy environment उस तरह से comparatively. 99-2000 में you went to England and then you stayed there for a good part of the next 2 decades. 22 years. 22 years. Yes, that's right. Zabardast. And again, देखें England, London in particular is like
a second home. It was my home until quite recently, but it's definitely like my second home now. Udhar bhi bahut time guzara hai, and actually I have some amazing friendships and even family there. So it's a place very close to my heart. And you've moved effectively to Pakistan या आपका भी on and off है? नहीं जी. Lock, stock and barrel with my wife and kids. With wife and kids? With the whole lot. Whole shebang. I would assume that the kids were born and raised in the UK. They were indeed. My older one is 10 years old. So we were a little bit concerned because he was like right on the edge के पता नहीं और उसके दोस्त वगैरह भी थे उधर तो एक थोड़ा सा वरी था हमारा. But I think इसमें एक ये भी चीज़ थी कि हम at least हर साल एक दफ़ा आते थे वापस. Right. So थोड़ा सा connected थे वो culture के साथ. Like घर पे तो बहुत ज़्यादा connected. Right. Close to their khala, you know, or close to their popo. In fact, you know, close to their dadi and things like that. So, you know, it was a bit of a soft landing, but what we were more worried about was कि actually दोस्तों को कैसे छोड़ेंगे, यहाँ पे कैसे deal करेंगे. Culture का भी फ़र्क है ना, मतलब आप उसको देखें हमारे लिए it's comparatively easier to actually make that. Even हमारे लिए भी मैं अपने भाइयों को देखता हूँ they're in the US and उनसे अब 10-12-15 साल बाद उनसे जब मैं पूछता हूँ वो आते हैं ना जब वो दूसरे दिन वो कहते हैं यार ये गाड़ी होगा क्या मसला है. So the culture is definitely you get so used to that. So for kids who've really been born and bred, I think वैसे इस तरह से it was smart कि 2-3 और साल गुजर जाते ना वो टीनेज हिट करना था उन्होंने and then it would have been impossible. देखिए मुज़म्मिल I wish that इसके अंदर इतनी प्लानिंग थी कि मैं आपको बोलूँ कि हमने बड़ा फुल प्लान किया मगर नहीं थी. I think इसमें लक भी बहुत इन्वॉल्व था. I think फार्मदार के साथ जो टाइमिंग हुई है it kind of just happened at the right time. Right. And this particular switch was this I mean focused on Farmdar? Absolutely. 100%. Was it driven by Farmdar? Entirely. Okay. तो you know because मैं तकरीबन एक you could say 3 to 4 months or 6 months something like that लंदन में बैठ के ये काम कर रहा था. अच्छा you left your job? I left my job, yes. अगर थोड़ा सा मुझे समरी है बता सकें पिछले 22 साल में आप कर क्या रहे थे? देखें जी सबसे पहले मैंने एक स्टार्टअप में काम किया. उस स्टार्टअप में शुरू में मैंने प्रोडक्ट में काम किया. एक्चुअली मैंने शुरू में शेल्फ स्टैक की उस स्टार्टअप के स्टॉक रूम के अंदर. तो आहिस्ता वहाँ से फिर मैं एक इकोनॉमिक्स डिग्री कर रहा था तो मेरे जो CFO थे sort of said come and help me and I ended up sort of helping on multiple fundraising rounds. तो हमारा जो आखिरी राउंड था वो तकरीबन 90 मिलियन पाउंड का था. तो उसके बाद और एक McKinsey की टीम थी जो हमें हेल्प कर रही थी. तो उनके पार्टनर के साथ मेरी काफ़ी काइंड ऑफ क्लोजली मैं उनके साथ काम कर रहा था. उन्होंने मुझे फिर कहा कि जी आप McKinsey क्यों नहीं अप्लाई करते, कम जॉइन अस, यू सीम टू बी समबडी हु माइट बी एबल फिट इन. मैंने लंदन ऑफिस ज्वाइन किया. वहाँ पे मैंने 3 साल लगाए मोस्टली इन हेल्थ केयर, इम्प्रूविंग हॉस्पिटल्स, इम्प्रूविंग काइंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस दैट इन द NHS रन हॉस्पिटल्स एंड थिंग्स लाइक दैट. और मैं थोड़ा काइंड ऑफ उस लाइफस्टाइल से तंग आ गया. यू नो McKinsey is aggressive. To be honest, I found it fascinating. Achha. You know, I didn't think of it as an aggressive place at all. But certainly there was one thing which was actually there was a lot of traveling involved. I was trying to raise a family at the time. I had a very young family, and you know, Jibran, who's my older son, he was like 1 or 2 at the time. तो उसकी वजह से फिर मैंने एक्चुअली सोचा कि गेट इनटू सॉर्ट ऑफ कॉर्पोरेट लाइफ और व्हाटएवर. तो मैंने ब्रिटिश टेलीकॉम BT को ज्वाइन किया. तो उनके टैलेंट पूल में उनका एक प्रोग्राम होता था फ्यूचर लीडर्स प्रोग्राम. उसके ऊपर मैंने ज्वाइन किया. इट वाज क्वाइट फैंटास्टिक. पहले 2 साल वो आपको बिजनेस की हर पार्ट को दिखाते हैं एंड यू हैव सम अमेजिंग स्पॉन्सर्स, द बोर्ड एंड पीपल लाइक दैट. एंड देन यू गेट टू सॉर्ट ऑफ सी हाउ द ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स बिकॉज इट वाज अ बीस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. 1.5 लाख लोग काम करते थे BT के लिए. राइट. ये उनकी सबसे बड़ी टेलीकॉम यूरोप का तो मुझे नहीं पता मगर सर्टनली UK की सबसे बड़ी. और इनका एसेंशियली है क्या ये आपका fiber to the home type hai ya is it like cell phone? So everything from infrastructure, which means pipes in the ground, right, to mobile. So it's and now a whole lot of other things as well. Right. You know, so the largest mobile operator, the largest broadband operator, the largest owner of infrastructure, and a natural monopoly to be honest, because it used to be owned by the state or वो privatized हो गई. Right. So luckily, you know, उधर मेरे थोड़े अच्छे associations बने with the management, or the senior management, and I ended up actually in one of the divisions which is called OpenReach, जो broadband basically provide करता है. तो फाइबर ब्रॉडबैंड की जो जर्नी थी UK के अंदर उसको मैंने काइंड ऑफ स्टार्ट टू एंड फॉलो किया बेसिकली. एंड इनिशियली मैं फाइनेंस वाली साइड पे था. फिर वहाँ से मैं निकला और मैं कमर्शियल साइड पे आ गया. तो मेरा जो लास्ट रोल था वो GM कमर्शियल फॉर ब्रॉडबैंड इन द UK था. Right. And it was fantastic because I was responsible for creating products that actually people
connect to in their homes and things like that. So I loved that aspect of Like it. real impact, real life. Exactly. And it was good, clean work. कोई उसमें, I never sort of had any burden on my conscience that I was involved in something that was, not completely clean and I understand. had a good impact. अब इसके ऊपर जाहिर है क्योंकि टाइटल के ऊपर ऑलरेडी लोग इस तरफ राग़िब हो गए होंगे, फार्मदार हमने 2-3 दफ़ा बोला, तो अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि हम टेल्को की इस खूबसूरत जर्नी और मैकेंजी की जर्नी से अब आने वाले हैं हम फार्मिंग के ऊपर. एंड दिस इज प्रॉब्ली द मोस्ट फैसिनेटिंग एस्पेक्ट, राइट? You're GM of British Telecom. जी. You clearly seem to have a lucrative, comfortable career in life. And जी, alhamdulillah. And suddenly you decide कि यार मैंने पाकिस्तान में जाकर उनकी फलों की या गंदम की यील्ड बेहतर करनी है. What's that thought process? Like, why does one go there? देखिए, it didn't happen overnight. It actually, the journey started quite early on. So back in 2015, we decided कि हमने अपने फार्म के, my family background is farming, Sadiqabad from my mother's side and Sheikhupura from my father's side. तो वी डिसाइडेड कि हम अपने फार्म्स को किसी तरीके से बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करें, बिकॉज एक्चुअली उनको हम यूटिलाइज़ कर नहीं रहे थे. और फार्म्स में हो क्या रहा था उस वक्त? बेसिकली लीज पे थे सारे, मोस्टली. अच्छा, ठीक है. जो हमारे मैंगो के ऑर्चर्ड्स थे वो हम व्यापारियों को दे देते थे. व्यापारी क्या होते हैं? आरती, फॉर एग्जाम्पल, सो कॉन्ट्रैक्टर. Right. अच्छा, आरती, माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन आरती वाज कि जो कि बेसिकली दरमियान में मिडिल मैन होता है जो कि आपको क्रेडिट देता है और जो कि आपका माल उठा के मंडी में बेचता है. करेक्ट. लेकिन आरतीज होते हैं जो कि वर्टिकली इंटीग्रेट करके ज़मीन ले लेते हैं. यस, एग्जैक्टली. और ये वो आरती थे जो बेसिकली हमारे से साल का या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे, और जब हमारा फ्रूट का टाइम आता था तो वो फ्रूट प्लग करके ले जाते थे. Right. और ये लमसम आपको अमाउंट दे देते थे? लमसम तो नहीं, मगर तोड़ के बेसिकली, बट इन गुड अमाउंट्स. राइट. यानी कि आपको मे बी 20% एट अ टाइम उसकी वैल्यू मिल जाती थी, ब्रोकन ओवर द कोर्स ऑफ द ईयर. राइट. तो उस जर्नी पे हम शुरू हुए. तो हमने अपने मैंगोज़ के साथ शुरू किया, उनको हमने यूके एक्सपोर्ट किया. उस वक्त मैं लंदन में बैठा होता हूँ. राइट. तो हम लोग ये समझते थे कि जी हमारे मैंगोज़ तो बेस्ट इन द वर्ल्ड हैं. और जब मैंने उनको देखा कि वो लंदन की मार्केट्स में आए, उनको मैंने वहाँ पे एक्चुअली मार्केट करने की कोशिश की, तो मुझे एक्चुअली माई आइज़ वर ओपन्ड. मुझे पता लगा कि एक्चुअली हमारे मैंगोज़ तो बॉटम ऑफ द पाइल हैं. अच्छा. उनकी क्वालिटी वॉज रियली पोर. The way that we were growing them didn't do justice to the varieties that we have. And then actually the way that we were transporting them and things like that weren't great either. Right. तो मैंगोज का वैसे जनरली इकोसिस्टम, बिकॉज मैंगोज पे आप काम करते रहे हैं. मुझे तो अमेरिका का पता है. अमेरिका में वहाँ पर उनके पास आते हैं 2 किस्म के मैंगोज. एक आते हैं मैक्सिकन मैंगोज जो ग्रीन रंग के होते हैं और थोड़े वियर्ड लुकिंग होते हैं. जी, खट्टे मीठे उस तरह के. एंड देन उनके पास आते हैं पाकिस्तानी मैंगोज जो कि वो $4 का एक मैंगो मिलता है और आप जलील हो जाते हैं कि यार ये क्या हो. 4 से भी ज़्यादा का होगा, क्योंकि एक्चुअली लंदन के अंदर जो अमेरिका से बहुत करीब है, तकरीबन 4 पाउंड का एक डब्बा होता है जिसमें 2 या 3 मैंगोज होते हैं. हाँ. और उसकी वजह ये है कि एक्चुअली वो एयर फ्रेट होता है. तो आप मैंगोज की प्राइस नहीं पे कर रहे, आप टिकट की प्राइस पे कर रहे हैं. That's the reason why. Right, but can they be transported through the sea or would they dry? Actually, potentially last I think 2 years ago, we actually sent containers of Chausa mangoes to the UAE. Okay. Which had not been done that frequently because वो travel नहीं करते ज़्यादा. And they came out. They were totally fine. They were totally yes. fine. तो उसमें क्या वो refrigeration and वो चीज़ें मैंने. हाँ जी, वो चीज़ें supply chain तो आपको sort out करनी पड़ती है. But actually back to my earlier point, supply chain is not the answer. Because हमने जब इसके साथ experimentation की, when we realized that our quality was really poor, so the first place we went to was supply chain. So we installed a blast chiller at the farm to pre-cool the mangoes after harvesting. उसके बाद हमने cold chain ली, हमने reefer containers try किए, हमने modified atmosphere containers try किए. उसके बाद मैं टर्की गया. मैं टर्की से अमेजिंग पैकेजिंग मिलती है, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग. और ये जो हमारे सारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक्चुअली फ्रेश फ्रूट B2B साइट पे उनको भी मैंने ये बताया कि एक्चुअली ये आप यूज़ करें, शेल्फ़ लाइफ के लिए बहुत ज़बरदस्त है. डेफिनेटली हमें ये चीज़ पता लगी कि आप शेल्फ़ लाइफ 1 हफ्ते से या 2 हफ्ते से इलोंगेट कर सकते हो. कितनी इलोंगेट कर सकते हैं? 14 days लेट्स से, राइट. लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट की अंडरलाइंग क्वालिटी ही ख़राब है, तो आप वो गंदे क्वालिटी की चीज़ की शेल्फ लाइफ को इलोंगेट कर रहे हैं. अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हेन you mention quality multiple times, what do you mean by that? Because when I see quality,
तो मुझे तो एज एवरेज यूज़र मैं मार्केट जाता हूँ, मुझे एक सख्त आम नज़र आता है, मैं उसको काटता हूँ, खाता हूँ, कमाल हो जाता है। बिल्कुल यही चीज़ है। सो अच्छा देखें, क्वालिटी में सबसे पहले आती है उस प्रोड्यूस की लुक। ठीक है, अगर उसके ऊपर धब्बे पड़े हुए हैं या उसके ऊपर निशान पड़े हुए हैं, अंदर से बेशक वो ज़बरदस्त हो, उसको कंज्यूमर्स मार्केट के अंदर हाथ नहीं लगाते, राइट। सो एक एक्चुअली ये कंज्यूमर बिहेवियर थोड़ा सा in my opinion, I don't like it. I think people should be taught. But it's true. Absolutely. It's 100% true. Yeah. I think people should be taught otherwise, but that is the reality. I mean, if I go to the US and I look at, sorry, मैं US का तो बहुत दिनों में UK कभी आया नहीं हूँ. It's same चीज़. But it's a beautiful place. But similar. वहाँ पर मुझे दिल करता है फ्रूट ज़्यादा खाने का. मैंने वो over time ये realize किया कि it's all really about the presentation. Yes. You don't find a single. यहाँ पर आप जाते हैं ना, आप जाके किसी फ्रूट शॉप में जाते हैं तो आपको एक डर लगा रहता है कि वो गंदे वाला पीस जो वहाँ पड़ा है वो ना डाल दे. ऐसे ही होता है. वहाँ पर every piece looks so appetizing कि you just wanna consume more and more fruit. बिल्कुल ऐसे ही है जी. एंड एक्चुअली लंदन में क्या होता था कि जब हम लोग होलसेलर्स को अपने आम बेचते थे, हम वो और आगे रिटेलर्स को बेचते थे, तो मैं जाके रिटेलर्स को भी उनकी दुकानों के बाहर ज़रा लॉइटर करके देखता था कि हो क्या रहा था. एंड व्हाट पीपल यूज्ड टू डू इज़ दे वुड टेक द बैड वन, take it out of the box, replace it with a good one, and then take that box. Right. तो at the end of the day एक bad mangoes का pile बना होता था, ठीक है, जो 20% 25% आपका बिल्कुल मैंगो वेस्ट हो गया, राइट. वो अंदर से बेशक ठीक हो, बाहर से वो गंदा लग रहा, राइट. सो एक क्वालिटी में एस्पेक्ट आ जाता है, द लुक ऑफ इट. द सेकेंड वन इज़ द कंसिस्टेंसी ऑफ इट. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? कई मैंगोज़ में बड़े डिफरेंट साइजेस होते हैं, राइट. एक तो वेराइटल डिफरेंसेस होते हैं, लंगड़ा छोटा सा होता है, दुसहरी बहुत बड़ा होता है, सिंदड़ी भी बड़े साइड पे होता है. मगर जब आप एक ही वैरायटी का मैंगो मल्टीपल साइजेस में इन मार्केट्स में भेजते हैं, बिकॉज उसकी ग्रेडिंग सही तरीके से नहीं हुई भी, बिकॉज आपके दरख्तों पे मैंगो ही उसी तरह का उग रहा है, बिकॉज अदरवाइज आप सप्लाई नहीं कर सकोगे, आपके कंसिस्टेंसी नहीं है इन द वे दैट मैंगोज आर ग्रोइंग, राइट. दैट एक्चुअली रियली हर्ट्स योर क्वालिटी एज वेल. नहीं, सो ये मैंगोज जो हैं ये ब्रीड्स है ना, एक पर्टिकुलर ब्रीड जो है वो एक पर्टिकुलर साइज की होगी. नहीं, एक पर्टिकुलर ब्रीड में भी साइज वेरिएशन आ जाती है. सो विद इन द सेम ट्री? यस, विद इन द सेम ट्री. एंड एक्चुअली इफ अ ट्री हैज़ टू मच फ्रूट ऑन इट, उसका साइज छोटा होगा. इफ अ ट्री इज़ एक्चुअली ग्रोन इन अ वे जहाँ पे आप उसको काइंड ऑफ प्रून करते हो और उसके फ्रूट को मैनेज करते हो, यू विल गेट बेटर साइज्ड फ्रूट. अच्छा, सो इट्स ऑल पार्ट ऑफ हाउ यू वर्क ऑन इट. एब्सोल्युटली राइट. Interesting. And obviously the variation can. So what I'm trying to understand is, एक तो आपका हो गया ना, जब आप गए और जाके आपने क्या कहलाता है, व्हाट्स द वर्ड फॉर इट, जब आप उतारते हैं फ्रूट जी, को, प्लक करते हैं, वो करते हैं, हार्वेस्ट का टाइम. हार्वेस्ट से पहले एक रोल है और हार्वेस्ट के बाद एक रोल है. एक हार्वेस्ट के बाद का रोल है आप जिसमें आपने कहा कि यार मेरे पास सारा माल आ रहा है, उसको सबको एक जगह पे डालने के बजाय सॉर्टर लगाओ. लाइक सो व्हाट आई थिंक इज कि जिस तरह मैं बाहर की फैक्ट्रीज देखता हूँ तो वो जो है जी एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जिसके थ्रू वो चीज़ों को ऑलरेडी इतना ज़्यादा उन्होंने सेगमेंट किया हुआ है कि नाउ यू नो व्हाट यू गेटिंग एंड द मोर you know what to expect, the more satisfaction you will. बिल्कुल ऐसे देखें. बट इफ़ यू हैव अ वेरी लार्ज ऑर्चर्ड जहाँ पे आप सॉर्ट करके एक कंटेनर लोड ऑफ गुड क्वालिटी कंसिस्टेंटली साइज्ड मैंगोज भेज सकते हो, द रेस्ट ऑफ इट काइंड ऑफ गेट स्पॉइल्ड और लाइक उसको इतना प्राइस नहीं लगती एंड थिंग्स लाइक दैट. हाउएवर इफ़ यू डोंट हैव अ वेरी लार्ज ऑर्चर्ड, तो फिर आपके पास चॉइस ही कोई नहीं होती बट टू मिक्स, राइट. एंड अ लॉट ऑफ दैट हैपेंस, राइट. एंड उनकी क्वालिटी के डिफरेंसेस, उनके जो मैंगो के साइज़ के डिफरेंसेस होते हैं, वो भी जिस तरह आप मैंगोज को ग्रो कर रहे हैं उस पर डिपेंडेंट होते हैं, इज़ माई पॉइंट. सो क्वालिटी के अंदर कंसिस्टेंसी भी आती है. एंड देन द अदर थिंग इज़ द एक्चुअल, जैसे आपने अर्लियर बोला था सख्त मैंगो, राइट. सो आपके मैंगो का टेक्सचर क्या है, उसका टेस्ट क्या है, दैट इज़ द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ इट. और हमें अपने फार्म के ऊपर मल्टीपल इश्यूज़ आ रहे थे विद मैंगोज गोइंग सॉफ्ट. अच्छा. एंड इस चीज़ को एक्चुअली कोल्ड चेन फिक्स नहीं कर सकती, राइट. इवन इफ यू कीप द प्रिजर्व द स्किन ऑफ द मैंगो फॉर लॉन्गर, इफ इट्स सॉफ्ट इनसाइड इट्स गोइंग टू रिमेन सॉफ्ट. ये ग्रोइंग का मसला था, राइट. एंड इस तरह के मसलों को हम लोगों ने टैकल करने की कोशिश की. सो व्हेन वी ट्राइड सप्लाई चेन एंड वी रियलाइज देयर वर मे बी सम इश्यूज बट नॉट फंडामेंटल वंस दैट वी कुड सॉल्व, बट द फंडामेंटल वंस रिमेन्ड अनसॉल्व्ड, वी एक्चुअली केम बैक टू द फार्म. ओके. एंड उस वक्त हमने एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए ड्रोन्स के साथ. हमने जाके ड्रोन ख़रीदा, एक मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा ख़रीदा, उस ड्रोन को खुद उड़ाया, उसकी मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजेस ली. हमने सैटेलाइट इमेजरी को के साथ एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू कर दिए. हमने सेंसर्स लगाए, वेदर स्टेशंस को देखा, थिंग्स लाइक दैट. एंड आफ्टर अबाउट 18 months ऑफ डूइंग दैट वी सॉ स्टेप चेंज, राइट. हमारी कंसिस्टेंसी बेहतर हो रही थी, हमारा फ्रूट दरख्तों के ऊपर ज़्यादा था क्योंकि ड्रॉपिंग्स कम हो रही थी.
हमारा पानी तकरीबन 50% कम लग रहा था. अच्छा. हमारा फर्टिलाइज़र बच रहा था अबाउट 30%. हमारे सो इन एसेंस हमारी क्वालिटी बेहतर हो गई, हमारी यील्ड बेहतर हो गई, हमारी इनपुट कॉस्ट कम हो गई और हमारी पानी की एफिशिएंसी ज़्यादा हो गई. Tell me about the पानी की efficiency. How does that work? So basically what we do, there's a number of ways of actually looking at this, but the simplest way of looking at it is कि आप plant का moisture level detect करो, right? A lot of people in agriculture, they look at the soil. और हमारा एक concept है वतर का, right? What's that? Water is the land is dried up. Right. So if the land is dried up, आप उसको पानी लगा दो. And हम actually generally पाकिस्तान में outside of drip irrigation, which is an amazing solution for this but expensive, हम लोग flood irrigate करते हैं. Right. When you flood land with water, 75% of it either evaporates or transpires, evapotranspiration. Right. ये एक बड़ी known चीज़ है जो FAO वगैरह इन सारों ने पाकिस्तान में की और उन्होंने देखा है, right? अब पानी हमें वैसे ही नहीं मिलता मुफ्त का, तो हमारे एरिया के अंदर आपको पानी पंप करना पड़ता है यूजिंग डीजल एंड इलेक्ट्रिसिटी. So imagine wasting 75% of the diesel and electricity that you're using, right? And that's a huge cost overrun, essentially. It's a big cost. तो हम लोग क्या करते हैं, we look at plant moisture levels, we call it the plant stress report. और उस प्लांट स्ट्रेस रिपोर्ट को आप अपनी लैंड को बड़े इजीली सेगमेंट कर सकते हो कि इस एकड़ में मैंने पानी लगाना है, इस एकड़ में मैंने पानी नहीं लगाना. एंड बेसिकली आप अभी भी फ्लड इरिगेट कर रहे हो, बट आप इंटेलिजेंटली फ्लड इरिगेट कर रहे हो रादर देन ब्लैंकेट फ्लड इरिगेशन. सो व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इज यू वाटर ट्रीज दैट नीड वाटर, यू डोंट वाटर ट्रीज दैट डोंट नीड वाटर, irrespective of what the soil looks like. And why does that happen? Because the top soil essentially gets dried up, but उसके नीचे पानी का moisture होता है. देखें जी, the weather, like it's baking hot, right? So if the sun is actually like hitting the ground all the time, of course the topsoil will kind of become dry. But अब mango trees की जड़ें कितनी नीचे हैं, right? It doesn't matter whether the topsoil is dry or not. It matters what moisture levels are in the tree, right? Right. तो हम लोग इसी तरह crops के ऊपर भी ना actually plant moisture levels को देखते हैं. And how do you define the वो sensors are on the plant? No, we get all of this with satellite imagery. So it's all remotely done. And actually, how would you identify कि plants में moisture है through satellite imagery, which is like thousands of kilometers, I would say, above the ground? So the thing is actually satellite imagery is quite amazing. तो जब हम एक सैटेलाइट, और हमारे पास we have multiple access to multiple 200 satellites, right? And we can command them, so we can tell them where to go at what time and things like that. But जब हम एक image लेते हैं from a satellite, normal image नहीं होती वो, ठीक है? सैटेलाइट इमेज के अंदर आपको अप टू 21 डिफरेंट बैंड्स ऑफ लाइट मिलती हैं, ठीक है? लाइक नियर इंफ्रारेड, रेड एज, थिंग्स लाइक दैट, राइट? अच्छा. सो एक तो ये चीज़ है. एंड सॉरी, मैं आपको वो कर रहा हूँ. नहीं प्लीज. वेरी इंटरेस्टिंग. वो जो आपको सैटेलाइट इमेजरी में वो मिली, वो बेसिकली लिविंग मटेरियल को फिर बता देती है कि वो कितना ज़्यादा. देखें जी, उसकी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें बताती हैं. थिंक ऑफ इट लाइक अ CT स्कैन, ठीक है जी? तो व्हाट द ह्यूमन आई इज़ नॉट केपेबल ऑफ सीइंग, वी कैन पिक आउट फ्रॉम द information contained within a satellite image. Interesting. And this is not just exclusive to like these big mango trees, but can also be, let's say, put to use for gandum ka crop. Absolutely. For which some is like a very exactly. Dekhen ji, for some of our clients, we even have done counting of garlic plants, right? We've used drones for that because satellites aren't kind of like उनकी इतनी resolution अच्छी नहीं होती, लेकिन हम इस तरह की चीज़ें भी कर सकते हैं because हमारी company is essentially a deep tech company. हमने AI workflows बनाई हुई हैं, हमारे पास data scientists और machine learning engineers हैं जिनका काम ही है. तो we can do amazing things with satellite imagery. And have you guys been able to at least map the farming? Have been able to identify the farming map of Pakistan at the very least. कि यार कहाँ पे हो, कहाँ पे रहा है, like a one shop repository. देखिए जी, that's the ambition over time. It's very easy to get I think a bad estimate of that because there's some freely available open source satellite imagery. ठीक है. But वो इतनी high resolution नहीं होती कि आप conclusively उसके साथ कोई चीज़ कर सकें, right? So for example, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ. एक किसी ने लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट की थी एक कि जी देखें मेरे इर्द गिर्द इतनी क्रॉप बर्निंग हो रही है क्योंकि सारी उनको सैटेलाइट इमेजरी में वो फील्ड्स काली नज़र आ रही थी और वो एक 10 मीटर पर पिक्सल की इमेज थी. ठीक है. अब हुआ ये कि मेरे पास एक्चुअली उसी एरिया की 0.5 मीटर पर पिक्सल की इमेज थी. ठीक है.
और उसको जब मैंने देखा तो एक्चुअली वो जो चीज़ें काली लग रही थी उनको वो यंग कॉर्न थी. इट वॉज एक्चुअली कॉर्न ग्रोइंग, इट वॉजंट क्रॉप बर्निंग. तो यू नो the resolution, the detail that you get from a high resolution image is just vastly different from freely available imagery. So हमारे ambition तो है at some stage to cover a large area in Pakistan, but actually we will go about it in a strategic and logical way. Of course, वो तो step by step, however that makes sense. So right now, what are you guys doing in terms of what's the product? जो आपने अपने लिए किया तो I understand. And if I were to extrapolate that to more of a consumer facing product, what would that look like? So हमारे 2 channels हैं. We have a direct to farmer channel और उसमें we have basically 5 products. They're all designed to address फार्मर के स्पेसिफिक पेन पॉइंट्स, जिसमें एक ये वाटर स्ट्रेस की रिपोर्ट है, इसी तरह एक जनरल हेल्थ की रिपोर्ट है, इसी तरह एक नाइट्रोजन लेवल की रिपोर्ट है जो फार्मर यूज़ कर सकता है टू अप्लाई फर्टिलाइज़र मोर इंटेलिजेंटली. और आप पानी की कॉस्ट की बात कर रहे थे, एक्चुअली मेन कॉस्ट फार्मर की फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड केमिकल्स हैं. सो आई अंडरस्टैंड द वाटर वाली तो चले मैं अपनी ओ लेवल्स की साइंस को थोड़ा सा यूज़ करके somewhat आपने इंफ्रारेड वगैरह बोला तो मैं पहुंच गया थोड़ा बहुत जी. How do you get nitrogen levels from the soil? I mean, is that something जिसमें फिर आपको at least on some level तो आपको कोई ना कोई डिवाइस तो डालनी पड़ेगी soil के अंदर to be able to get? देखें जी, again it's not soil, it's plants. So the best device that you can put in a soil is a plant. Okay. Right. It can tell you a lot. So basically आप plants को देख के identify कर रहे हैं कि यार इसमें deficient, like so you're identifying the deficiencies and then telling them कि ये क्या है? We can identify the ranges of nitrogen within a plant. So if it's excessive, we can tell. If it's okay, we can tell. If it's deficient, we can tell. Based on the look of the plant. Based on the light that bounces off the plant, and right. Oh, interesting. So it's not because जब आप look की बात करते हैं ना, normally a person would think like an average RGB camera photo. But जो हमें imagery मिलती है, as I mentioned, उसमें 21 bands of light होती हैं. Right. So we can actually tell a lot. जैसे एक X-ray होता है. X-ray is just basically different bands of light. So हम एक प्लांट का एक्सरे या सीटी स्कैन कर सकते हैं. सो वी फाइंड आउट अ लॉट. वी कैन टेल कि उसके नाइट्रोजन लेवल्स क्या हैं, उसका मॉइस्चर लेवल क्या है, उसकी ओवरऑल जनरल हेल्थ क्या है, और हम ये भी बता सकते हैं कि उस प्लांट के स्ट्रेस का लेवल क्या है. ठीक है. और वो इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि एक्चुअली वो कॉरिलेट करता है कि इस प्लांट में कोई बीमारी या कोई डिजीज़ तो नहीं आई हुई. और उसमें एक ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि हम एक्चुअली प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जी यहाँ पे रिस्क ऑफ डिजीज़ है. तो फार्मर्स को हम एक्चुअली अहेड ऑफ टाइम बता सकते हैं कि इस एरिया पे जाके आप फोकस करें. Right. And how often is this information shared with the farmer? I mean, do they essentially subscribe to a plan for a season जिसमें आप उनको actively monitor कर रहे हैं, या is this more of a okay, you know, like this is my farm, just see what's going on and then give me a report and then move on to the next one? By the way, for most farmers we are free. So they don't have to subscribe to anything. All they have to do is register. And register करने के बाद वो हमारी ऐप पे जाके अपनी फील्ड की बाउंड्री मार्क कर देते हैं और उनको वीकली रिपोर्ट्स जनरेट होना शुरू हो जाती हैं. उनके फार्म pertaining to their farm. Yes, pertaining to exactly what they mark out as a field. It's not just randomized data about the entire industry or space. It's personalized down to meters. Just to confirm. जी. वहाँ पर एक बैठा है कामरान वजीराबाद में जी, और उसके पास 2 एकड़ के ऊपर उसके अब्बा जी जो हैं वो गार्लिक उगा रहे हैं जी. और वो कहता है कि यार इन अंकल ने ये बात बोली है तो मैं अभी और इसी वक्त डाउनलोड करता हूँ, मैं ये करता हूँ. उसको 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद रजिस्ट्रेशन जो भी आपका प्रोसेस होगा उसके बाद डेटा मिलना शुरू हो जाएगा. करेक्ट. और हर हफ्ते मिलेगा. दिस इज लिजिट. कोई इसमें पाकिस्तानियत तो नहीं आप करने लगे यहाँ पर? कुछ भी नहीं करने लगा. देखें, इसमें सिर्फ एक चीज़ है कि हम इसको प्रॉब्ली एट सम लेवल कैप करेंगे, पर अगर वो कैप इतना बड़ा होगा कि वो बेसिकली कॉर्पोरेट्स को सेपरेट करने के लिए होगा. आई मीन आई अंडरस्टैंड, वो तो दैट्स इजी राइट. यू कैन जस्ट आइडेंटिफाई कि यार उसकी बाउंड्री के हिसाब से अगर 15 एकड़ 20 एकड़ 50 एकड़ तो आप कहेंगे कि यार जो बड़ा लैंडलॉर्ड है वो पैसे दे दे, जाहिर है वो करेक्ट स्केल पे कर रहा है. बिल्कुल ऐसे ही है जी. तो और हमारा आई थिंक एवरेज लैंड होल्डिंग एटलीस्ट जहाँ पे हमने एनालिसिस की और हमने देखा है तकरीबन 5 से 6 एकड़. तो उसके मल्टीपल लेवल पे हम लोग ये इन्फॉर्मेशन फ्री पे प्रोवाइड करके दे रहे हैं. और इसके अलावा सो आई मीन यू नॉट मेकिंग मनी आउट ऑफ दिस. तो पहला तो मेरा सवाल ये होगा कि देन व्हाट्स द कैच है? देखें जी, व्हाट वी डू इज़ उस फार्मर की इंफॉर्मेशन, देयर डेटा इज़ एक्चुअली वैल्यूबल.
So we are creating a repository of data, and we know that at some stage we will be able to monetize that farmer's data somehow. किसी तरीके से हम उसके डेटा के अंदर से कोई एनालिसिस या एनालिटिक्स करके किसी को आगे सेल कर सकते हैं. मतलब एक तो मुझे इससे बेसिक चीज़ ये समझ आती है कि आपकी द मोर फार्म्स यू हैव, द मोर डेटा यू गेट, एंड द मोर आई मीन बेटर प्रिडिक्टिव एनालिसिस आप उसके ऊपर कर सकते हैं. लेकिन ये कि उसको डू यू थिंक कि उसी से फिर इवेंचुअली आपका मॉडल बेहतर होगा तो आप अपनी मोनेटाइजेशन बेहतर कर सकते हैं? डू यू थिंक कि उस डेटा को भी ऑन सम लेवल you can monetize locally or internationally? Definitely, I think उसमें एक big data का element है, but if I think of a local model, for example, अब देखें, there might be things that the farmer needs once we have a critical mass of farmers on our platform, where we are best placed to actually provide them those things. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक फार्मर को बता रहे हैं कि जी हमने आपका टेस्ट किया, आपके टेस्ट के रिजल्ट्स ये हैं, उसका अगला लॉजिकल स्टेप होगा कि जी अब आप किसी से एडवाइस लें लाइक अ डॉक्टर, और वो आपको प्रिस्क्रिप्शन देगा और आप यहाँ से जाके दवाइयाँ खरीदें. राइट, सो उस चीज़ को हम इनेबल कर सकते हैं ओवर टाइम. एंड आर देयर पार्टनर्स अवेलेबल इन पाकिस्तान? मैं कहता हूँ मेरे पास एक फार्म है, नहीं मैं कहता हूँ मैं एक फार्म ख़रीदना चाहता हूँ, तो मैं जाता हूँ और मैं जाके डेरा इस्माइल खान की मोटरवे, आपने देखी है? बिल्कुल देखी, बड़ी खूबसूरत मोटरवे बनी है रिसेंटली. पूरी मोटरवे बहुत खूबसूरत है. और उसके रास्ते में आपको फार्म लैंड बड़ा सारा अच्छा नज़र आता है, फ्लैट लैंड है बड़ा खूबसूरत. तो मैं जा रहा था, मेरे दोस्त का निकाह था, तो आई वाज जस्ट फर्स्ट टाइम आई वाज गोइंग ऑन दैट रोड एंड आई वाज लाइक यार ज़िंदगी में फार्म लैंड खरीदना है, यू नो, यहाँ पर. तो मैं कहता हूँ जी मैंने फार्म लैंड खरीद लिया. अच्छा, मुझे ₹1.5 का नहीं पता फार्मिंग के बारे में, राइट? सो मैंने फार्म लैंड के ऊपर इन्वेस्ट कर लिया. नाउ आई स्पोकन टू यू, सो आई एम लाइक यार मैं इस बंदे को कहता हूँ कि मेरा ज़रा एनालिसिस करके बताए कि क्या सिचुएशन है. आपने मुझे एनालिसिस करके दे दिया. अब मैं क्या करता हूँ कि मैं नाउ आई नीड टू, आई मीन व्हाट डू आई डू विद दैट एनालिसिस? देयर हैज़ टू बी सम सॉर्ट ऑफ एन एक्सपर्ट. बिल्कुल. जो आके मुझे बता दे कि यार एटलीस्ट एट द वेरी लीस्ट ये XYZ चीज़ें आप करें तो आप उस पर कर सकते हैं. देन आई कैन प्रॉब्ली हायर or like an arty of sorts who can just sort of agronomist. Yeah. so वो इस तरह का partner, would that be available? बिल्कुल. देखें जी, the Pakistan agri value chain ecosystem, whatever you want to call it, इसमें there's a number of multinational companies, there's a number of new startups popping up, there's a number of people who have been doing advisory for a long time. So what we don't want to do is reinvent the wheel. And I think मेरा एक perspective भी है, in general macro perspective on Pakistani farming का landscape जो है, which we can perhaps cover a little bit later. But we are a very open collaborative organization. We like partnerships. Right. तो हमारे एक partner हैं, for example, Vital Agri Nutrients. ठीक है. वो specialty fertilizer बनाते हैं जो पाकिस्तानी soils के लिए बहुत अच्छी है. It's low pH, it has sulfur in it, जिससे actually आपकी land की over time kind of condition बेहतर होती है. Right. तो जनरली हम क्या करते हैं, अगर हमें पता होता है कि उनकी एक टीम एक एरिया के अंदर है, हम फार्मर को अपना टेस्ट और डायग्नोस्टिक दे देते हैं एंड वी आस्क देम टू कॉन्टैक्ट दीज गाइज, ताकि वो उनको एक प्रॉपर बेस्ड ऑन आवर टेस्ट एंड डायग्नोस्टिक एक काइंड ऑफ डिटेल प्लान देते हैं. Right. Over time we might get into this, but at this point in time we are a test and diagnostic digital first company. Right. And again, just to confirm that the testing and diagnostics is like a weekly thing, can happen. Yes, right? absolutely. So evolving situation के बारे में लोग आपसे information ले सकते हैं. And then there is another aspect to the product as well, I believe. Absolutely. So our other channel is the B2B channel. Okay. जहाँ पे हम basically agri-based enterprises या agri businesses को serve करते हैं. ठीक है. उसमें multiple चीज़ें आती हैं. For example, अगर आप सबसे basic वाले angle को देखें तो food processors, people who take crops like sugarcane or wheat or rice, you know, multiple other staples, उनको प्रोसेस करके वो पैकेज करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, या प्रोसेस करके चीनी बना देते हैं, या प्रोसेस करके उससे you know धागा बना देते हैं, थिंग्स लाइक दैट. तो उनको हम लोग ऑन डिमांड एनालिटिक्स देते हैं, उनके लिए बिस्पोक प्रोजेक्ट्स भी करते हैं. आपने अर्लियर गार्लिक की बात की थी. कॉर्पोरेट फार्म्स इज़ अनदर बिग सेगमेंट फॉर अस. राइट. तो कॉर्पोरेट फार्म्स में गवर्नमेंट पाकिस्तान आर डूइंग अमेजिंग स्टफ. जी, उन्होंने G1 गार्लिक के यू नो काफ़ी बड़ी प्लांटेशन की हुई है. दे हैव अ वेरी forward-looking and kind of amazing vision about agriculture in Pakistan. Interesting. G1 garlic, I heard this is a new variant that Pakistan Agriculture PARC created. Correct. And it's very exclusive to Pakistan, and उसका आजकल जो सीड है वो ब्लैक में बिक रहा है. नहीं जी, ब्लैक में तो नहीं बिक रहा, मगर ये है कि एक्चुअली इट वाज पार्क दैट क्रिएटेड द सीड. आपने एलिफेंट गार्लिक का सुना? नहीं.
तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक गार्लिक की वैरायटी है जिसे कहा जाता है एलिफेंट गार्लिक, वो बहुत बड़ी होती है, ठीक है, इज़ द साइज ऑफ योर फिस्ट बेसिकली, राइट। तो इन्होंने उसी की तरह का एक गार्लिक वैरायटी यहाँ पे निकाली है कॉल्ड G1 गार्लिक, जिसकी एक ये काइंड ऑफ फिलॉसफी है कि ये हम बहुत लार्ज स्केल पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, स्पेशली बिकॉज हमारे साथ काइंड ऑफ चाइना इस तरह की कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इसकी बहुत हाई कंजम्पशन होती है। तो अभी पार्क ने जब ये सीड क्रिएट की थी तो उनके पास बहुत कम थी, तो अब G1 गार्लिक जो लग रहा है वो एक्चुअली फॉर सीड पर्पसेस लग रहा है, एंड वो बहुत महंगा बिक रहा है इस वजह से बिकॉज वी डोंट हैव इनफ ऑफ इट। सो इट्स जस्ट लाइक एक वेव आई हुई है जिसके बाद जब वो क्रिटिकल मास कर लेगी तो फिर वो एक सस्टेनेबल इकोनॉमी एग्जैक्टली ऐसे मेक सेंस। सो ठीक हो गया। सो आप कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मैं एक वीट की मिल हूँ और मेरे पास वीट आएगी, तो वीट इज़ जनरली वीट खैर स्टेबल रहता है और उसका वो नहीं होता, मैं शुगर कर लेता हूँ क्योंकि शुगर को ज़्यादा मसला है, क्योंकि वो ज़्यादा अरसे अगर रुक जाए तो यू नो ड्राई आउट होना शुरू हो जाता है। व्हाट वैल्यू डज फॉर एग्जांपल योर प्रोडक्ट ब्रिंग टू देम? श्योर, तो सबसे पहले तो जी वी कैन डू अ वेरी लार्ज स्केल स्कैन, लेट्स से 50,000 एकड़ या 1 लाख एकड़, उसके ऊपर हम 90+ प्रिसिजन से बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या क्रॉप लगा हुआ है। अच्छा, शुगर केन कहाँ लगी हुई है, वीट कहाँ लगी हुई है, कॉर्न कहाँ लगी हुई है, बरसीम कहाँ लगी हुई है, ग्रासेस कहाँ लगे हुए हैं, चिलीज कहाँ लगी हुई हैं, सारा ऑटोमेटेड तरीके से मैप कर देगा कि यार इधर इधर यही हो रहा है। बिल्कुल, हमने बेसिकली मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग मॉडल्स बनाए हुए हैं जिनमें हम सैटेलाइट इमेजरी फीड करते हैं और उसके एंड पे हमें वो एक क्लासिफाइड इमेज देता है जिसमें जो वो सारी क्लासेस होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होती हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मिल के जो एसेंशियली लेट्स अज्यूम एजेंट्स हैं जिन्होंने जाना है और जाके फार्मर को रीच आउट करना है, they just run one scan and they know कि यार इस सीजन में मुझे इसके पास जाना है and I'm good to go. They don't have to drive around everywhere and देखिए mills anyway do this, they do manual scans, right, because even to find कि हमारे catchment area में या हमारे gate area में कितनी sugar cane लगी है is a useful statistic for them because they can plan their operations on that. right. मैनुअल में थोड़ा ये इशू होता है कि एक्चुअली पीपल डोंट रियली डू इट प्रॉपर्ली, राइट, लाइक वो रजिस्टर्स के ऊपर लिखा जा रहा है, there's a lot of human intervention. Exactly. And there's hundreds of people who have to go out in the field to do this, and गर्मी में ख्वारी का वाला काम and things like that, so human nature kind of gets the better of most people. Right. इस चीज़ को हम एक रिमोट तरीके से बहुत easily we can just give you that information digitally With a much smaller cost. Much smaller cost than 100 people on the ground, absolutely. Yeah, no comparison. Interesting. तो ये एक सिर्फ पहला स्टेप है, right? So what we can also now do is we can classify different varieties of sugarcane. Right. So we can tell you which variety is growing where. Why is that important for the mill? Because in variety के recovery rates different होते हैं. अच्छा, ठीक है. So how much sugar they make from ganna is a factor of what variety they're growing. So we can tell them that. We can also tell them कि ये शुगर केन कब प्लांट हुई थी, यानी ये सितंबर में काश्त हुई थी, फरवरी में काश्त हुई थी, या ये रटून क्रॉप है. Okay, what's a ratoon crop? So when you plant sugar cane, आप उसकी सीड्स ज़मीन में ही रहने देते हो, आप उसको नीचे बेस से काट देते हो. अच्छा, तो अगले सीजन आपको रीसीड नहीं करनी पड़ती फील्ड, वही उसी सीड से क्रॉप फिर वापस आ जाता है, राइट? अच्छा, इंटरेस्टिंग. और कई फार्मर्स 2 साल 3 साल 4 साल चलाते हैं. और वो जो नेक्स्ट वाला होता है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम होगा and then थोड़ा अगेन वो वेराइटी पे डिपेंड करता है. कई ऐसी वेराइटीज़ भी थी जो एक्चुअली आपको सेकेंड ईयर इवन बेटर काइंड ऑफ यील्ड देती हैं. बट पॉइंट बीइंग कि एक्चुअली हम काफ़ी डिटेल में जा सकते हैं फॉर मिल्स बिकॉज वी यूज़ हाई रेजोल्यूशन इमेजरी. आर एनालिटिक्स एबिलिटी इज़ बेसिकली आर ब्रेड एंड बटर, सो वी इन्वेस्ट अ लॉट इन दैट. Right. We hire the best brightest minds who are actually very passionate about agriculture, so उनके लिए ये it's not work, it's Right. passion, right? तो Interesting. Recently you announced a funding round. जी. थोड़ा सा उसकी डिटेल बताएंगे? हाँ जी, we recently closed our first ever funding round. It was $1.3 million, led by Indus Valley Capital and Atif Awan, and other kind of notable investors like Shehryar Haidari and Devsai Ventures. And in general, we were very lucky. We got to pick our investors. तो हमने ऐसे लोगों को select किया है जैसे for example LMKR. They're an amazing success story in tech in Pakistan, and they have very deep knowledge both on the tech side but also on the agri-tech side. Right. So with them on board, we get to draw on that वो knowledge. institutional knowledge जो आपको मिल रही है Exactly. growth के लिए और सारा Exactly. और इसके अलावा मुझे ये बताइएगा कि what I mean, so
with the $1.3 million, Ji. what's the, because you are essentially a digital first, sit in your head office, use these satellites, control them and get the stuff done. Where's the growth money going in? So basically there's essentially two things that we do with that. Ek to we buy data. So satellite imagery and things like that. And we focus and concentrate on really, really high value, the best available in the world, right? Like for example 0.3 or 0.5 meter per pixel data. Usse behtar koi satellite abhi hai nahi puri duniya mein. Secondly, we are hiring really, really top quality. This is very niche what we do. So for example, even within artificial intelligence, एक deep learning की field है, computer vision की field है, एक machine learning की field है, हम उन fields के अंदर भी actually बहुत specific चीज़ें कर रहे हैं. So the types of people we are looking for, they're rare. And they're expensive. Correct. So makes sense. And you're hiring right now? Yes. We're actively hiring across tech, across product, and across sales. And your head office is based in Karachi, but you have an office in Islamabad as well. Ji, we're at the Hive in Islamabad and we're at Colabs in Lahore as well. Achha, so you're in all three cities. Very cool. So I'm going to move the conversation now away from, stuff pertaining to Farmdar, and I'm going to just sort of tickle your brain with some agriculture knowledge. अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं कि with all of the data that you guys are gathering, मैं जब पाकिस्तान के फार्मिंग के, I don't even know where to start. But let's just start with this. Some of the conversations that I've had on the podcast regarding farming were, एक साहब ने मुझे आके बताया कि जी पाकिस्तान में शुगर केन उगाना जो है वो एक्चुअली इट्स नॉट अ वेरी लुक्रेटिव, वो एक्चुअली शुगर बनाना इज़ नॉट अ लुक्रेटिव थिंग. इट्स समथिंग जो कि गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल करके इट्स एक्चुअली मच चीपर टू जस्ट इम्पोर्ट इट. And it's better to actually grow, or it's a very water intensive crop as well. It is. जो कि पाकिस्तान में अगर हम एक्चुअली पानी को उसकी रियल डिमांड सप्लाई के ऊपर प्राइस करना शुरू कर दें तो the economics of sugarcane will absolutely make no sense. फिर इसी तरीके से एक और साहब ने कहा कि जी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जब बात होती है तो पाकिस्तान में हर साल ये बात आती है कि कॉटन जो है वो हमारा पाकिस्तान में क्यों नहीं उगता, why are we importing cotton? और उन्होंने कहा कि यार पाकिस्तान में कॉटन उगाना जो है वो इट्स नॉट लुक्रेटिव, यू कैन जस्ट इम्पोर्ट दैट कॉटन, इट्स अ डर्ट चीप रॉ मटेरियल. आप उसको करो, आप वैल्यू ऐड करके एक्सपोर्ट करो. व्हाई डू यू नीड टू फोकस ऑन द लोएस्ट बॉटम ऑफ द फूड चेन आइटम. बिल्कुल. एंड देन ऑल्टरनेटिवली हमने देखा कि ऑलिव की सक्सेस स्टोरी एंड वो वाली जो कि विच आर मच मोर नेटिव टू आवर एनवायरनमेंट, एंड सो वहाँ पर आई थिंक पोटोहा रीजन वगैरह में ऑलिव की प्लांटेशंस वगैरह पूरी होना शुरू हुई हैं पिछले 8-10 साल में. उसी के साथ साथ मैंने ये भी सो व्हाट आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम ऑल ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन इज दैट अ लॉट ऑफ आवर फार्मर्स डोंट रियली, आई मीन वो एक ना ट्रक की बत्ती के पीछे चले हुए हैं कि यार जो जिस तरह से जो सुनाया तो चलो जी सारे के सारे उसके पीछे लग गए, rather than really optimizing our every aspect of it, right? हमें पता है कि हमारा ये लैंड है, हमारा इतना पानी अवेलेबल है, हमारा इतना ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं that are at play, and उसकी इकोनॉमिक्स क्या है. अच्छा, अब मुझे एक चीज़ जो बड़ी मज़े की समझ आई वो ये आई, पहला इसलिए मैंने आपसे मैपिंग का सवाल पूछा कि पहली चीज़ तो मुझे ये समझ आई कि अगर मैं पाकिस्तान के एग्रीकल्चर के इकोसिस्टम को या रादर पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी के इकोसिस्टम को समझना चाहूँ तो मेरा पहला क्वेश्चन मार्क दिया गया, गिव मी द डेटा. Sure. Give me the data to help me begin to understand where the problems are, and so that I can, turn the right knobs. And the fact is that more often than not, I wouldn't have the right data. पानी का, for example, पानी का a lot of times मैं देख रहा था कि we talk about water scarcity and Pakistan being a water stressed nation, and I also saw that Pakistan has one of the highest per capita consumption of water in the world. Pakistan has almost, so हम कहते हैं जैसे पानी का मसला जब भी आते हैं लोग कहते हैं गाड़ियाँ धोना बंद कर दो. 8% of your entire water is actually going into domestic consumption. 12% is going into industrial consumption. तो हम कहते हैं कि यार ये नेस्ले पानी चोरी करके ले गया तो ये हमारी जो ना वो सीमेंट वाले कितना पानी ज़ाया कर रहे हैं. 80% is going into agriculture. Exactly. With one of the lowest yield in the world. It just blows your mind. Absolutely. It's inefficiency. Exactly. It's not a metric of like getting more water, getting dams and more water and praying for more rain. It's all a matter of just using that water for the right thing, and you'll probably have excess water available. Exactly. Dekhiye, I'm not sure about excess water, but I can tell you one thing for certain. We can make the use of water a lot more efficient. And actually, a farmer doesn't really need to invest a lot of money in doing that. For example, drip irrigation is the perfect solution for that.
However, it's expensive. Why is it expensive? Infrastructure? हाँ जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पाइप्स लगाने हैं आपने, एक मोटर लगानी होती है, पंप लगाना होता है, थिंग्स लाइक दैट. यू हैव टू मेंटेन इट एज वेल, यू हैव टू कीप द नोजल्स क्लीन एंड ओपन एंड थिंग्स. यू नो, कई एरियाज में नहीं लगता, कई एरियाज में फ्रीज हो जाता है, थिंग्स लाइक दैट, राइट. तो उसका जो हमने एक आई गेस एक मोर लो टेक सोल्यूशन निकाला है यूजिंग डीप टेक इज़ कि हम आपको प्लांट मॉइस्चर लेवल्स का बता देते हैं. तो अगर फ़र्ज़ करें आपके पास 5 एकड़ हैं, ये हमारी रिपोर्ट्स आपको बता देती हैं आपने किस एकड़ को पानी लगाना है, किस एकड़ को पानी नहीं लगाना. ठीक है. हमने जब ये खुद ट्राई की थी हमारा 50% पानी सेव हुआ था. अब हम ये लार्ज स्केल पे कर रहे हैं, राइट. वी आर डूइंग दिस फॉर कॉर्पोरेट फार्मर्स, वी आर डूइंग दिस फॉर फार्मर्स, वी आर डूइंग दिस फॉर लार्ज फूड प्रोड्यूसर्स एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड एवरीवन इज सीइंग द वैल्यू इन इट, Right. because essentially you don't have to do something very difficult to be able to apply that and action it in the field. Right. So I think water efficiency के multiple angles हैं. I think our canal system is amazing, but it's old. And there's a lot of seepage. I was incidentally talking yesterday to the folks from Valley Irrigation, जो हमारे center pivot irrigation के pioneers हैं पाकिस्तान में. What's that? It's basically a mechanism where a big arm goes around the field in a circle. It's pivoted in the middle, और वो sprinklers के through पानी देता है. Oh, interesting. वो हो रहा है पाकिस्तान में? हाँ जी. Is this a new local company? companies भी कर रही हैं. Is this a new company or is this like I think they've been in operation in Pakistan for at least 15 years or more. अच्छा. जी. Interesting. But now people like Haji Sons and Jafar Brothers, even they are producing this. And this is all locally produced? Yes, I think so. Interesting. However, the very interesting conversation with the Valley Irrigation guys was they have this salt, it's a polymer, और उसको जब आप कनाल में डालते हो तो वो एक्चुअली जहाँ से सीपेज हो रही होती है वहाँ जाके वो स्लज बन जाती है. लाइक इट टर्न्स इनटू ऑलमोस्ट दिस पट्टी. Oh wow. And they're kind of I don't know whether it's their discovery, but they've got an amazing product for the Pakistani market. Just is another solution which could help a lot. Right. क्योंकि कनाल की सीपेज को रोकना is actually maintenance, right? और अगर आपने कनाल सिस्टम को मेंटेन करना है, why not use this product? It's very Right. cheap. It can be used at scale. So do you know there are things in the ecosystem that are happening. Yeah. पाकिस्तान का मे बी एग्रीकल्चर में ecosystem में एक ये थोड़ा सा इशू है कि हम लोग बहुत fragmented है. And I have come across a lot of people who are trying to do everything. They want to be the B2B marketplace, they want to be the analytics provider, they want to be the provider of inputs, they want to be the advisory council for farmers, they want to manufacture sensors. I feel like I know the ones you're talking about. And honestly, like I think everyone is doing that right now. And because I mean people get excited about the entire thing. यार इतनी ज़्यादा problems to solve है, but I feel like उसका alternate ये है कि you're not really solving anything, you're just solving everything. लेकिन you will not achieve anything if you aim to boil the ocean or try to reinvent the wheel. हमारा ये अप्रोच है इसके अंदर, हम अपने एरिया के अंदर एक बहुत फोकस तरीके से not only at a Pakistan level but like our test and diagnostic, we are really aiming at it being the best in the world. Right. And we want to do that, and जहाँ पे already लोग काम कर रहे हैं, we want to partner with them to make sure that actually as an ecosystem the farmer is getting the benefit. Right. Now if we start to try and do everything ourselves, we will simply not be able to benefit the farmers. So I mean that makes sense, but then when you're talking about doing everything, that also means you're talking about कि भाई मैं जो है ना जाके कोल्ड स्टोरेज में भी जा रहा हूँ, वेयर हाउसिंग में भी जा रहा हूँ, पैकेजिंग में भी जा रहा हूँ. एसेंशियली मैं वो क्या है, वो डोल है, द वंस हू सेल बनानास ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो मैं वो डोल बन जाता हूँ और मैं पूरी दुनिया से सोर्सिंग करके पूरी दुनिया में बेच रहा हूँ. बट एंड आई गेट दैट, बट विद इन योर पर्टिकुलर फ्रेमवर्क, do you think, and this is just an open question, but do you think there is a possibility that you're able to solve, because अभी जो आपने प्रॉब्लम सॉल्व की है ऑन अ माइक्रो लेवल, बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि आपका ये प्रोसेस था वेयर I feel like if someone has to solve a problem for themselves and then make that a product, that's the best product available in the market. Correct. Right? क्योंकि वो जितना दिल लगा के आप अपनी चीज़ को सॉल्व करते हैं ना, आप उसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा फालतू के पैसे लगाकर आप बहुत सारी इनोवेशन में चले जाते हैं जो कि आप शायद क्लाइंट के लिए ना जाए. बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप मुज़म्मिल. देखें, अब हम मिल्स और शुगर मिल्स पर्टिकुलरली की बात क्यों कर रहे थे. हम लोग शुगर केन खुद भी उगाते हैं और हम पिछले 15 सालों से शुगर केन सप्लाई भी कर रहे हैं मिल्स को. सो वी अंडरस्टैंड दैट सेगमेंट रियली वेल. सो वी फील दैट एक्चुअली देयर इज़ अ huge amount of base knowledge that we have as farmers of sugarcane, right? And we can apply that to make sure कि जो हम products develop कर रहे हैं वो farmer के लिए भी काम करते हैं, mill के लिए भी काम करते हैं. And we really believe कि इस arena के अंदर एक virtuous circle भी है. हम अगर farmer की yield बढ़ा सकते हैं, वो mill का भी फ़ायदा है, farmer का भी फ़ायदा है. अगर हम farmer की
यील्ड्स भी बढ़ा सकते हैं और उनकी रिकवरी भी बढ़ा सकते हैं, वो मिल का भी फ़ायदा है, फार्मर का भी फ़ायदा। बैक टू योर अर्लियर पॉइंट, देखें, it's very debatable whether sugarcane is native to Pakistan as the right crop to grow and things like that. However, I do want to say one thing. Pakistan is one of the top 10 producers of sugarcane in the world. So something is right. Right. Okay? I think the bit that is wrong is हमारी yields bottom 50 में. Right. Right? That's what? So, Really? yes. So हमारे, और ये multiple crops के साथ हमारे problems हैं. हम लोग wheat के भी top 5 में आते हैं, हम लोग rice के भी in terms top... of land acreage. No, in terms of tons produced. Right? So if you look at amount of crop produced in tonnage, sugarcane, wheat, rice, mangoes, dates, oranges, there's a number of crops where we are in the top 10 in the world. ठीक है. अगर आप इन सारे क्रॉप्स की यील्ड पर एकड़ देखें तो हम बॉटम 50 के करीब हैं. नहीं, so that's what I'm saying ना कि फिर तो आप यानी कि you're essentially large swathes of land के ऊपर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं और आप उसमें अपने टॉप 10 में तो पहुंच रहे हैं, बट अगर आप उसकी यील्ड बढ़ा दें तो शायद दो चीज़ें हो सकती हैं. या तो आप क्रेजी नंबर्स पे प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, या आप कहेंगे कि यार मुझे 1 लाख एकड़ पे उगाने की जरूरत है, 20,000 50,000 एकड़ के ऊपर मैं वो काम कर सकता हूँ. आई कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्रॉप. देखें जी, इफ आई लुक एट दिस फ्रॉम द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, राइट, तकरीबन 2050 तक एक 10 बिलियन के आसपास वर्ल्ड की पॉपुलेशन होगी. इन ऑर्डर टू फीड एवरीवन हमें तकरीबन 60 to 100% मोर फूड चाहिए. राइट, डबल करना. एग्जैक्टली. अगर हमने हर किसी को खाना देना है तो डबल करना है. अगर जो लोग अभी भूखे हैं उनको भूखा ही रखना है तो 60%. राइट. ये करने के लिए वी नीड एडिशनल लैंड मास 8 times the size of Pakistan to produce that 60 to 100% extra food. Okay. So this is a global problem. Food production is inefficient everywhere. It's just that these problems are actually massively accentuated in Pakistan. हमारे क्लाइमेटिक मसले भी हैं, हमारे वाटर स्कैसिटी के मसले भी हैं, हमारे फार्मिंग प्रैक्टिसेस के मसले भी हैं, लैक ऑफ डेटा का मसला भी है, एक बहुत वास्ट और फ्रैगमेंटेड इकोसिस्टम का मसला भी है, इन माई ओपिनियन, इन माई हम्बल ओपिनियन. तो what we are hoping to do is actually use data and tech to kind of help the ecosystem make better decisions so that we can actually do something about this. Yeah. नहीं, मैं इसीलिए, so that's why I was basically when I look at the future, what I'm trying to understand is, देखें, एक तो आपने वो सैटेलाइट का डेटा लिया और आपने इंडिविजुअल माइक्रो लेवल के ऊपर बता दिया यार तुम्हारे केस में ये मसाइल हो सकते हैं. बिल्कुल. But then when I am a data company, I'm gonna actively once I've done my job, एक चीज़, एक प्रोसेस है, उसको मैं ज़ाहिर है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकता हूँ मेरे सोल्यूशन का, लेकिन ये कि मैं उसमें और कितना क्या ही कर सकता हूँ. तो 2 साल 3 साल 4 साल बाद एक पॉइंट आएगा जिसको मैं कहूँगा कि यार धंधा चल रहा है, सर्विस चल रही है, उसके ऊपर मंथली मेरा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है एंड आई एम गुड. Then as a data scientist or as a data first company, I'm gonna actively start looking for कि यार और क्या डेटा अवेलेबल है जिसको मैं प्लग करता रहूँ और मैं इंसाइट्स को मल्टीप्लाई करता हूँ. बिल्कुल ऐसे ही. राइट जी. सो दैट बेसिकली मीन्स कि यार ऑल आई रियली नीड टू डू इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मैप करूँ कि यार मेरे पास, मैं सारा मैप ना करूँ, आइडियली मैं सारा मैप कर लूँ, बट वो नहीं भी हुआ तो मैंने अपने एक सर्टेन रीजन को मैप करना शुरू कर दिया. उस रीजन के पास क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा, पिछले साल के कितना ज़्यादा प्रोसेसिंग कितनी हुई, क्या हुआ, वो डेटा मेरे पास आ रहा है. फिर मेरे पास पानी का डेटा आ रहा है कि यार इस जगह से कितना पानी क्रॉस हो रहा है, इस जगह से, वो एक्टिव डेटा, रियल टाइम डेटा है मेरे पास. और उसके बाद हिस्टोरिकल डेटा आ रहा है कि यार जब पानी इतना होता है तो उससे ये इम्पैक्ट आता है, पानी इतना होता है. फिर मेरे पास वेदर डेटा है कि यार वेदर में जब ये होता है तो उससे ये इम्पैक्ट पड़ता है. एंड सो इट्स नॉट जस्ट नेसेसरली जस्ट एक्सक्लूसिव टू माई क्रॉप. You become this companion app that just goes a whole long way of helping the farmer 10 years from now, essentially, if you have all of that data. And once you have all of that data, you plug that data with the financial markets and really begin to understand कि यार काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है, आप एक काम कर रहे हैं किसी भी चीज़ के अंदर होता है कि आपको you have this एक फसाड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी दफ़ा आपको लगती है ना, बिकॉज आपके दिमाग में प्रॉपर्टी है, ठीक है, फाइलें खरीदते रहे, बेचते रहे, 20 साल बाद आपको लगता है यार भाई ने तो बड़ा पैसा बना लिया. जब आप एक्चुअली नंबर्स पे जाते हैं तो आपको पता लगता है. अभी मैं पिछले दिन देख रहा था, समवन पुट इट अप ऑन ट्विटर, 2015 to 2022 और 18 to 2022 उन्होंने क्या किया कि 17 to 2022 उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डॉलर उठाया और उन्होंने गोल्ड उठाया और उन्होंने KSE 100 उठाई. अच्छा, आपसे मैं पूछूँ, मैं किसी से भी पूछूँ ना, वो कहेगा यार पागल है, स्टॉक्स पे क्यों डाल रहा है, डॉलर और गोल्ड सबसे बेहतर रिटर्न देंगे. राइट. उसने एक्चुअली डेटा पॉइंट्स को प्लग किया और आपको पता है पिछले 4 साल में व्हेन डॉलर हैज़ डिवैल्यूड लाइक क्रेजी एंड गोल्ड हैज़ गॉन अप एंड एवरीथिंग, KSE 100 हैज़ गिवन द बेस्ट रिटर्न्स. Interesting. Right. And much higher than inflation. Dollar actually has given lower than inflation returns. So you don't really make any money
what you do is कि आपके दिमाग में पैसा हो गया लेकिन एक्चुअली बाइंग पावर रिड्यूस हुई ओवरऑल. बिल्कुल ठीक. So वो जो चीज़ है वो do you think you can potentially be able to help farmers make those decisions of which crop I need to buy, I need to put in? Because when I look at a problem to solve for the industry on a higher scale with data, I think Pakistan में it's not just a matter of कि जो farming है वो है. I think जो overall ecosystem है that needs to be better managed. And वो हमारा, I can't expect my policy maker to do it because my policy maker A is not well equipped to do that, B does not have the right data. And I think you're the right layer जिसके थ्रू हर चीज़ में पास होना है. उसने पॉलिसी ने भी पास होना है और उसमें उसने भी. देखिए आप 100% सही बोल रहे हैं. वी सी ourselves as the base layer of data creation, जिसके ऊपर multiple layers भी आएंगे जो हम खुद डालेंगे, और multiple ऐसे we would like the rest of the ecosystem to use that where they can add multiple layers of value add on top. Right. Right. And as time goes, you're exactly right कि हमारे पास multiple kind of like levels के ऊपर multiple features के साथ, multiple facets के साथ data gather हो रहा होगा. तो things will emerge out of that as well. For now, we really want to focus on efficiency and productivity. Makes sense. Because we see that as an area जहाँ पे हम जाके immediately dial turn कर सकते हैं, right? You know, if we can make sugarcane production more or sugarcane kind of growing more productive, and we can like increase yields or increase recoveries, that's something I think we're really well placed to do. So absolutely in the future all this will come. And to be honest, आपने स्कैनिंग की बात की थी और पाकिस्तान की बात की थी. एक हमारा बहुत बड़ा एडवांटेज है पाकिस्तान में एग्रीकल्चर में. आवर एग्रीकल्चर इज जियोग्राफिकली कॉन्सेंट्रेटेड. ऑरेंजेस का एक काइंड ऑफ डिस्ट्रिक्ट है सरगोदा, जहाँ पे मोस्टली और जगहों पे भी उगते हैं, मगर हमारी क्रिटिकल मास ऑरेंजेस की सरगोदा में. Pakistan is a top 5 producer, I think, of dates in the world. Right. All of those are in district Khairpur. अच्छा. हम चिलीज उगाते हैं जो उमरकोट में उगती हैं सारी, कुंडरी में. So you can really focus your energies on. Exactly. हाँ. इसी तरह you know rice is a belt, rice belt आपने सुना होगा. तो actually अगर हम इसको थोड़ा strategically और geographically segment करके जाएं, we can cover a lot of staple crops, a lot of important crops to Pakistan without having to scan all of Pakistan. Right? And actually, so that is the plan. That is how we're going to go about it. And that is, आप इसको एक kind of digital land grab या इस तरह से associate कर सकते हैं. But like, rather than just going all out, we want to go strategically. Strategically, I understand that. And that's what's getting me excited as well, because the possibilities are endless, right? And you can essentially go in all directions. I mean, what I'm thinking is कि यार, in the ultimate, once you're a unicorn, and I do believe this is a unicorn just waiting to happen, you can really begin to predict, because you have the satellite data of the entire world. You can really say, yaar, what is Thailand doing in terms of XYZ production, and what they've just done is going to, ये होता है, analysts होते हैं, बैठे होते हैं, आपके पास वो रियल टाइम फर्स्ट हैंड डेटा आ रहा होगा कि यार यहाँ पर क्रॉप इस बार फार्मर ने कुछ और गेम खेली है जिसकी वजह से एक वैक्यूम क्रिएट होने वाला है, तो मैं अपने अच्छा नया क्रॉप लगने लगा है इस और इस जगह में, जिस विच इज कंड्यूसिव टू द क्रॉप दैट्स नॉट ग्रोइंग इन थाईलैंड एनीमोर. देखिए हम लोग इन्वेस्टर्स को एक काइंड ऑफ एग्जांपल देते थे इसका, वी वांट टू बी अ ब्लूमबर्ग फॉर एग्रीकल्चर. ठीक है ना जी. तो एक्चुअली दैट इज व्हाट यू आर डिस्क्राइबिंग हियर. सो एक्चुअली दैट्स द गोल. आई आल्सो मस्ट एडमिट कि देखें अभी रिसेंट जो हमारे मार्केट कंडीशंस हैं या इकोनॉमिक डाउनटर्न की काइंड ऑफ इम्कानात हैं या हो चुके हैं, उसकी वजह से हमने अपने आप को थोड़ा सा एक काइंड ऑफ पॉज करके we've had to revisit our plans and take stock. Right. And it's been very fortunate that actually our funding came at the time that it did. We are still very well capitalized. There's also, because of sort of some layoffs and things like that in the market, there's good talent available, more than it was 6 months ago. Right. तो हमारा plan है to actually double down on important segments first, so that हमारी जो funding मिली है, we don't burn through it very, very quickly. Right. And actually we preserve it for longer. And that basically actually is also an advantage, because we become kind of experts in a particular area. If अगर हम उसी चीज़ को replicate कर सकते हैं in Pakistan across other crops, for example, that is a growth area for us. और फिर उसी चीज़ को हम different geographies में भी replicate कर सकते हैं. We were actually in fact, we are being currently incubated by Microsoft. अच्छा. In the MENA region. They have an accelerator called GrowthX. We're the only company from Pakistan in that accelerator.
And why we apply it is actually they set you a real commercial challenge in the accelerator. So it's not just to attend, कि आप आएं जी बैठें, आप presentations दे दें और like 6-7 महीने के बाद आपको हम इन्वेस्टर से मिला देंगे. सो वी रियली लाइक द फैक्ट कि उन्होंने एक बिजनेस चैलेंज सेट किया हुआ था जिसमें Koch Holdings, which is a Turkish conglomerate, 6% of Turkey's GDP is their contribution. So they're huge. They own Turk Tractor, which is Turkey's largest tractor manufacturer. और I think वो Al Ghazi Tractors के भी उनकी कोई kind of JV या शेयर होल्डिंग है. तो उनका चैलेंज था कि आप ये चीज़ अगर हमारे से बेहतर कर सकते हैं then we're interested. So they have an app with about 1 million farmers that does plant and analytics. So they gave us that challenge. And alhamdulillah, we had 2 successful pilots with them. Very cool. So they have actually asked us to quote for providing them services in Turkey. Oh, very cool. So if we can do stuff really well in Pakistan, actually it starts to apply elsewhere. Pakistan is a large enough agricultural kind of economy. Pakistan is a large enough agricultural producer. यहाँ पे जो crops produce हो रहे हैं वो हमारे region में और जगहों पे भी हो रहे हैं. Sugar cane इंडोनेशिया में भी होती है, थाईलैंड में भी होती है, cotton टर्की में भी होती है, इजिप्ट में भी होती है. तो ये चीज़ें outside of Pakistan भी spread करेंगे. How's the feedback from the actual mill and the farmer and I know that it must be excruciating. पाकिस्तान में किसी को भी जाकर डिमांड क्रिएट करना बड़ा मुश्किल होता है कि यार listen, this is going to help you. But also I feel like because you have your own sort of success story, it's comparatively much easier to really just begin to see कि यार देखो भाई मेरा माल अच्छा बिक रहा है ना, तो it's only a matter of enough seasons passing where the next person is like यार अच्छा वो क्या गेम खेल रहा है तो I'm going to start going for that game. देखिए on that point we would welcome others in this in Pakistan, and the reason for that is that whether it's the farmer or whether it's a business to business kind of mill or somebody in the agri value chain, we want our consumers to be as aware as possible of what is out there. तो अगर मैं इसको एक marketing funnel के point of view से देखूं, उसमें सबसे unaware बंदा है जिसको problem की awareness ही नहीं है. Right. They're problem unaware. Right. उसके बाद आता है प्रॉब्लम अवेयर. उनको प्रॉब्लम का पता है लेकिन उनको सोल्यूशंस का नहीं पता. राइट. फिर आते हैं सोल्यूशन अवेयर, जिनको प्रॉब्लम की भी अवेयरनेस है, उनको ये भी पता है कि एक्चुअली सोल्यूशंस भी हैं आउट देयर. और फाइनली आते हैं प्रोडक्ट अवेयर, जिनको ये भी पता है कि ओके ये सोल्यूशन क्या है और उनको ये भी पता है प्रोडक्ट कौन सा. तो हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में फार्मर्स को और B2B एंटरप्राइजेस को प्रोडक्ट अवेयर कराएं. उसके लिए हम खुद नहीं कर सकते. वी नीड अदर पीपल टू एंटर द ecosystem. It's a vast ecosystem. Even 100 startups like that us would probably not be able to put a dent in it immediately. Right. So we want others in the market. What's the potential opportunity? अगर मैं purely numbers में कहूँ. देखें जी, वी बिलीव वी कैन बी अ यूनिकॉर्न. दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस. हम तीनों को फाउंडर्स जो हैं हमने अपने करियर्स को जला के मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा. एक एक्चुअली मुझे फ़नी स्टोरी याद आई है. मेरा मुजफ्फर जो को फाउंडर है, आई वाज इन लंदन, मेरी उसके साथ फ़ोन पे बात हो रही थी और मैं बता रहा था कि यार कोई एक टर्किश मे बी कॉन्करर था जो काइंड ऑफ लाइक किसी बीच पे गया था और उसके बंदे जो थे वो काफ़ी थके हुए थे तो उन्होंने अपनी बोट्स जला दी थी. तो मैं अभी यही कॉन्वर्सेशन करके आया हूँ अपने एग्जिस्टिंग काम के साथ. मैं बोट्स जला के आ गया हूँ. तो अब मैं लैंड कर रहा हूँ एंड यू हैव टू लुक आफ्टर मी. एंड तो वी हैव लाइक अ ह्यूज बिलीफ इन दिस एक्चुअली बीइंग वेरी पॉजिटिव इन पाकिस्तान. इसका मैं आपको एक काइंड ऑफ this is something I like to quote ke, as a startup and particularly as a startup founder, I'm always looking for what is our unfair advantage in the market. And I believe Pakistan's unfair advantage is agriculture. Achha. So I think the opportunity is absolutely vast. Why do you say so? देखें जी, हम लोग top 10 हैं in so many things. If we are able to actually improve our practices with the help of the ecosystem, if we can actually improve our efficiency, particularly improve our productivity, we can become regional and global leaders in agriculture. अगर हम लोग bottom 50 से actually 20th तक आ जाएं तो हम लोग probably 2-3 places चढ़ जाएंगे even further in the global rankings in agriculture. We have the ability to export all our food. We actually have the means, हमें नेमत मिली हुई है कि हम दुनिया के लोगों को खाना खिला सकते हैं. यार ये बड़ी सुनने में आती है, ये बात एक्चुअली ट्रू है या ये ऐसे बस ड्रामा है कि यार हमारे पास बड़ा कुछ है? देखें, आप मोटरवे की बात कर रहे थे अर्लियर, राइट? आई वुड इनकरेज यू कि आप ज़रा मोटरवे पे सिंध वाली साइड पे जाएं. अच्छा. यू विल सी एक्चुअली कि इतना एग्रीकल्चर है पाकिस्तान में.
and our potential to actually be world leaders in it is basically, it's down to us. Right. There's no external forces stopping us, right? So ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के बारे में भी quotes, I think Steve Waugh का था, या Ricky Ponting, somebody like that, he said कि only people who can beat Pakistan is Pakistan. तो ये एग्रीकल्चर में भी यही सीन है. The only people who can hold us back is us. And it's also a very important, it's not just Pakistan के लिए, it's also very globally. I was looking at, yesterday I was looking at a report of Bill Gates really just, binging on farmland all over the world. And उसके ऊपर उन्होंने conspiracy theory बनाई हुई थी. But generally, when I look at Bill Gates, I don't see him as this evil, overlord. But I actually see him as beginning to identify the problem 20 years in advance. Yeah. And I feel like what he's identified is कि यार दुनिया में food security is going to be the number one crisis over the next few decades. And obviously he ties that down to climate change, and you will see that in Bill and Melinda reports as well. And और उसमें आपको ये realization होती है कि with climate change, a lot of inputs are going to get expensive. Input of water, input of energy, input of, I would say, labor as well in some cases. And when you realize that, and you realize that the cost of food is going to exponentially rise globally, then you realize कि यार ये तो it's not just, हमारे दिमाग में तो याद है ना कि यार हम या तो कोई सिलिकॉन चिप प्रोड्यूस करें, ये क्या गंदम मंगाएं, लेकिन गंदम is gonna be very real 20 years from now, बिल्कुल. And to be honest, even today it is. अब देखें जो kind of war की वजह से यूक्रेन के अंदर क्राइसिस वगैरह आया हुआ है, this is going to send shock waves to staple food prices. Yeah. तो एब्सोल्युटली देखें, हमने अगर 10 बिलियन लोगों को फीड करना है और हम वी वांट एक्चुअली पीपल नॉट टू स्टार्व, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस बेटर. एंड आई थिंक पाकिस्तान इज़ सुपर वेल प्लेस्ड कि हम इस चीज़ में एक लीडिंग रोल लें. ये हमारे पास कैपेबिलिटी है. आई थिंक इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो मिसिंग हैं, एंड इट विल टेक सम टाइम, but we as an organization are entirely focused on that particular agenda. We want to see Pakistan become regional or global leaders in agriculture. Makes sense. Mohammed, I'm going to wrap this up very, very soon, but one last question before I move on to my show ending question that I ask everyone. पहले तो मुझे ये बताइएगा कि you've been around here, farming में पहले भी आप थे. जाहिर है अब जब आप ecosystem में you've sort of आपने वो डाइव मारी है, वैसे तो आपको खैर 10 दिन ही हुए हैं, बट आई एम श्योर वर्चुअली आपने होगा एंड को-फाउंडर के साथ कॉन्वर्सेशंस हुई नहीं होंगी. What's your take on other people? Are there other players, like you said, there is a need for 100 different startups, and I'm actually hearing about startups here and there, really beginning to start to have that chatter about agriculture. And personally speaking, I mean, for the longest time, I'm a totally, Islamabadi boy, जिसने कभी ज़िंदगी में सोचा ही नहीं कि खाना कहाँ से आ रहा है. Everything else is just वो. But last 2 to 3 years, this has started to become a very real conversation कि यार ये क्या हो रहा है और इसको किस तरह फिक्स किया जाता है. और जब पढ़ा लिखा और पैसे वाला जब इस चीज़ में घुसता है तो फिर आपको ऑटोमेटिकली आपको पता है कि इंस्टीट्यूशनल फंडिंग भी आती है और सारा कुछ आता है. How do you first of all see the ecosystem now beyond Farmdar? जी देखिए, there's multiple people in the ecosystem already and it's growing, and actually there's new and innovative companies joining the ecosystem all the time. एक तो हमारा एक MNC कॉर्पोरेट लेवल पे या एंटरप्राइज लेवल पे इकोसिस्टम एग्जिस्टिंग है, जिसमें आप कैम, FMCG, इन सारी कंपनीज को काउंट कर सकते हैं. फिर हमारे पास काइंड ऑफ एक नॉट इंस्टीट्यूशनल बट आई वुड से लार्ज बिजनेस लेवल के ऊपर भी काइंड ऑफ एग्री के अंदर है. एंड इसमें आप काउंट कर सकते हैं पीपल लाइक जाफर ब्रदर्स, हाजी सन्स, corporates like Gourmet getting into agriculture, which I think is a massively positive thing for Pakistan. I'm so bullish about that and very pleased about that. तो एक वो चीज़ भी हो रही है एग्रीकल्चर के अंदर. इसके साथ साथ स्टार्टअप स्पेस में भी लोग आना शुरू हो रहे हैं. सो फॉर एग्जांपल आवर फ्रेंड्स एट ग्रोटेक, सावी, Crop2X, and others, they are also coming to this place. इनके साथ हमारी रेगुलर, मे बी नॉट रेगुलर बट एवरी नाउ एंड देन बातें भी होती हैं. एंड आई ऑलवेज से टू देम व्हाट आईड लाइक टू रिपीट नाउ, विच इज़ कि देखें, प्लीज़ डोंट ट्राई टू डू एवरीथिंग, डोंट बॉयल द ओशन. अपना आप एक स्ट्रेंथ पिक करें, उस चीज़ को ज़रा आप एक्चुअली डेप्थ के अंदर प्रूव आउट करें. यहाँ पे if you try and do everything at the same time, it's too vast an area for you to actually be successful. You need a lot of resources, you need a lot of partnerships and things like that. So what I would love to see in Pakistan is actually some collaboration, and actually people becoming more focused in their areas of expertise, and then partnering with other existing organizations that are institutional, that are actually very willing to help.
हमने LMKR एंड वी आर सो लकी टू हैव देम, उनको एज इन्वेस्टर्स हम इस वजह से लेके आए हैं बिकॉज उनके पास ये कैपेबिलिटी है. दे कैन हेल्प अ स्मॉल PDC स्टार्टअप लाइक अस विद देयर नॉलेज, विद देयर कॉन्टैक्ट्स, विद देयर काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशनल रीच. So I think more of that needs to happen in the ecosystem. And finally, I would say कि देखें जब मैं टेक के लोग ढूंढ रहा हूँ, right? The amazing thing is everyone I speak to is somehow connected to agriculture in Pakistan. Yeah, somebody's grandfather used to do it. Yeah, somebody grew up in an area जहाँ पे agriculture was big. Yeah, somebody already has kind of some connections. So I would really encourage young people to start thinking about agriculture and tech in Pakistan as like a really emergent and potentially very explosive area. Right. ठीक है, like इसमें especially on the AI side there are some amazing applications. So young bright minds have to focus on this now so that we can kind of reap the rewards of that in the coming years. And inshallah we are planning to do that. Like, you know, we give a lot of importance to the people we hire on the tech side. You know, they're basically the engine of our organization. And inshallah, I hope that others will do that as well, and we'll manage to inspire the younger generation to kind of get involved in agriculture. Makes sense. Mohammed, we're at the 1 hour 13 minute mark, and I'm going to wrap this up. This was incredibly insightful. मेरी जो weight था ना जो agriculture को समझने का, वो आज पूरा हुआ है. Thank you so much for being part of the show. I'm going to ask you one last question that I generally ask everyone, and I want you to focus on your particular area of expertise. इस case में, you were in Pakistan, you know, born and bred, lived there for most part, and then eventually you left for the UK for 22 years. It's a long time, but then you chose to come back to Pakistan, and you're obviously उस पे बंदा with all of the नाजुक modes and everything that the country is going through, you think कोई ना कोई आपको एक नज़र आ रहा है future. How do you see Pakistan 28 years from now? अगर मैं आपसे particularly पूछूं in the let's say agriculture space, what's the dream? And maybe you can give me two images. One with the best case scenario, and one with the case scenario that you actually see कि यार ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये हैं, ये चीज़ें annoyances हैं, government policy शायद इतनी अच्छी नहीं है, and so this is the medium case, and if everything goes well, this is the best case. देखिए जी, आई थिंक पाकिस्तान हैज़ द पोटेंशियल टू बी अ वर्ल्ड लीडर. A lot has to go right for that to happen, and I think it's probably a little bit of a stretch. So you know, in 20 years a lot has to go right, and maybe also factors that are probably not within the control of Pakistan almost entirely, right? So, you know, Pakistan ki geopolitics bhi kafi complex hai, and I think, you know, that plays a part. So, but I do feel that actually if some things go right, for example, we are amazing at tech. Pakistani people are very entrepreneurial. अगर इन चीज़ों को हम कंबाइन करें और इनको हम एग्रीकल्चर में लगाएं, और अगर हमारी सॉर्ट ऑफ पॉलिसी लेवल पे भी थोड़ी सी चेंजेस आएँ, फॉर एग्जांपल वी स्टार्ट इंक्लूडिंग मोर वुमेन in agriculture. 60% of women, 60% of the workforce in agriculture are women. If we want to do something in agriculture, we have to influence them. We have to give them a stake in it. Right. Unko smartphones pakdaएं. Right? If we do things like that, I really think that Pakistan has the opportunity to be a regional and a global leader in agriculture. हम लोग already एक बहुत बड़ा producer हैं. There is no reason why we cannot become a very productive producer. We could become one of the biggest exporters. We have the raw material and ingredients to do that. And do you think, how optimistic would you be in 100, 0 to 100 में से? I would say I'm 70% optimistic. That's not bad. I would take that. Mohammed, thank you so much for being part of the show and for sharing all the insight. Thank you so much for having me. It's been such a pleasure talking to you. Likewise. And for all of you guys, अगर आपको मोहम्मद की किसी बात से agreement or disagreement हो, या thoughts on the agriculture space in Pakistan, farming, आपका अपना कोई connection हो और आपको इनकी बातों से कोई insight मिली हो, let us know in the comment section below. What do you think about Pakistan में agriculture tech, future of agriculture in Pakistan? इसी के साथ साथ ऑडियो प्लेटफॉर्म्स वाले सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, आने वाले एपिसोड्स का आपको नोटिफिकेशन मिलेगी. यूट्यूब वाले लाइक का बटन दबाएंगे, एंगेजमेंट बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों में हमारी कन्वर्सेशन पहुंचेगी. नीचे दी हुई लिंक पर क्लिक करके TBD कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम डिफरेंट फीडबैक भी लेते हैं, गेस्ट रिकमेंडेशन भी लेते हैं, आर्टिकल्स भी शेयर करते हैं. यू कैन जॉइन दैट एज वेल. यहाँ पर कहीं पर इजी पैसे जैस कैश आ रहा होगा. इफ यू लाइक टू सपोर्ट द चैनल, वी एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम ₹1 to as much as you like. It's a thought that counts. But anyways, this was Sayyid Muzammil Hasan Zaidi. You are watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.